से आगे बढ़ा। 4 अहलकार कंपाउंड में थाने के करीब धमाके में जख्मी हुए। वाक़े के बाद बड़ा बाजार को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। पुलिस अहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी के खदशात, सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। रावलपिंडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश, कलदम टीटीपी और ब्लोच लिबरेशन आर्मी से है। दहशतगर्द शहर में खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज और नकदी बरामद। शनाख्त अजमल अमीन, फेरोज, हामिद बशीर और अवैस शाह के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में उबूरी तौसी मिल गई। नेपरा ने 3 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची और इतराफ को बिजली फराहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने उबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाइसेंस में तजदीद की दरख्वास्त कर रखी है। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, जिसके बाद लाइसेंस की मियाद बढ़ाने या ना बढ़ाने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। मुल्क में नए बहरान की दस्तक। मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी, जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते, गैस महंगी होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान। मजीद बोले, साइफर को सियासी तजुर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन PTI ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। साइफर सिर्फ 2 या 3 लोगों की नज़रों से गुजरता है। साइफर को लोगों के सामने लाने से कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। ऐसी बातें ना करें, सियासत की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। करे कोई भरे कोई। बिजली सारिफिन के साथ सालों से यही हो रहा है। मुल्क भर में बिजली की कानूनी और गैर कानूनी चोरी अरूज पर है, जिसका खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। बिजली तकसीम कर कंपनियां हुकूमती मिली भगत से आवाम की जेब पर डाका डाल रही हैं। घंटों की एलानिया और गैर एलानी लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ अब तक मौसर कार्रवाई क्यों ना कर सकी? ये वो सवाल है जिनके जवाब आवाम जानना चाहते हैं। बोल न्यूज़ ने आवाम की आगाही का बेड़ा उठाया। खुसूसी नशरियात में तज्जियाकारों ने हुकूमती डाके पर हकाइक से आगाह किया। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों में शामिल होगा। CPPA ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक रेस्कोस के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर्क कत्ल केस में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। अदालत ने पीर की सुबह 10:30 बजे सरेंडर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस याहिया खान ने रिमार्क्स दिए कि पहले सरेंडर करें, फिर रिलीफ मिलेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने केस में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। कहा कि क्वाइटा कत्ल केस में GIT कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि अदालत के सामने सरेंडर करना ज्यादा अहम है। आप तो पूरी FIR खत्म कराना चाहते हैं। वकील ने कहा कि FIR अफवाहों पर काटी गई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप अपनी इस्तदा पढ़ें कि आपने क्या मांगा है। FIR में अपने मुतल्लिक मामले को चैलेंज करते तो अलग बात थी।
आपने तो पूरी FIR को ही चैलेंज कर रखा है। कत्ल की FIR भला कैसे कलअदम करार दी जा सकती है? चेयरमैन PTI हाजिर हों। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के इल्जामात की FIA तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर लिया गया। FIA की टीम तलबी का नोटिस वसूल कराने ज़मान पार्क पहुंच गई। एहलकार ने नोटिस वसूल करवा दिया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 24 जुलाई को तलबी। चेयरमैन PTI को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी कर दिया। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ, उनके अहल खाना की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नैब तफ्तीशी ऑफिसर ने करप्शन के शवाहिद न मिलने की तस्दीक की। सानहा 9 मई जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तौसी। उमर सरफराज, एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी कर दी गई। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में भी 3 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने चालान की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। Against spin. Beautiful, absolutely glorious shot. पाकिस्तान का ICC चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गोल में कमाल करके लंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेट से लंका ढा दी। 131 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 50 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 24, साउथ शकील 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सरफराज का बैट सिर्फ 1 रन ही उगल सका। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकनार किया। प्रभात जसूरिया ने 4 विकेटें ली। पाकिस्तान के साउथ शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। Oh, up is. Oh, taken. Brilliant catch. Oh, that was a nice, yes. Catch. And taken. इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। We've sent humanitarian assistance. We believe that prolonged conflict brings immense hardship and sufferings to civilian populations. We hope, therefore, that peace will prevail so that the people of Ukraine and Russia can enjoy peace dividends. In our meeting, I emphasized the importance of peaceful resolution of disputes and conflicts through dialogue and engagement, and Pakistan's readiness to support peace initiatives which can bring peace in the region. As a country in a volatile region, we understand how long-standing regional conflicts can endanger our collective security. The Ukrainian war has also brought difficulties for developing countries in the global south, particularly in terms of fuel, food, and fertilizer shortages. Pakistan is no exception. We therefore have a vested interest in promoting peace and reconciliation. We hope for a peaceful resolution through dialogue and diplomacy. Finally, I would particularly like to appreciate the Ukrainian government for its principled stance in supporting the resolution on countering religious hatred, constituting incitement to discrimination, hostility, or violence at the Human Rights Council in Geneva on the 12th of July.
As we look to the future, I am confident in our joint efforts to strengthen the bilateral relationship. We resolve to move forward in fostering cooperation and friendship between the peoples of Pakistan and Ukraine. I thank you. Thank you, Minister. It is indeed a big honor for me to be the first ever Ukrainian foreign minister who is paying an official visit to Pakistan. And although it's nice to be the first who came here and to be hosted by the first ever foreign minister of Pakistan who is hosting Ukrainian foreign minister, I think it's wrong. It's wrong that, that it's happening only now. 30 years of Ukrainian independence, Ukraine and Pakistan have enjoyed excellent relationship. We were happy to work with you in the 90s, throughout 90s and further on in the area in helping you build, strengthen your armed forces. We were always standing next to you in times of food crisis, and 2 years ago it was we were happy to help you to counter the flour crisis when Ukrainian traders delivered more than 1 million tons of grain. And of course, we will always remember that Pakistan provided Ukraine with humanitarian aid in the times when we needed it the most. And we understand that it was not an easy decision in terms of domestic economic situation, but this is what friends do. They help each other in times of the greatest need. So my visit here is a sign of appreciation of bilateral relations that have existed between Ukraine and Pakistan for more than 30 years. But we also tried to look into the future. And today I mentioned to my dear colleague and friend that war does not stop life. And we are thinking of how we were discussing today how we can boost trade, how we can solve existing problems for Pakistani students who had studied in Ukraine before the war began, and how we want to develop cooperation in this area. I briefed Minister about the opportunities Ukraine offers in the area of digitalization of state services to make government more convenient to engage with for its own citizens. We were really I think it will not be exaggeration to say that today we were looking into the future of our bilateral relations and what we can do together. And as Bilawal mentioned, yes, we agreed to reinvigorate some of our bilateral mechanisms. We will be looking forward to holding the inaugural meeting of the Ukrainian-Pakistani Commission on Economic Cooperation. And one more issue that became particularly topical since Monday, it's the future of the Black Sea Grain Initiative. I briefed Minister about the rationale behind Russia's withdrawal from this initiative, about its consequences for global food security. We regret that it will be Ukraine, countries of Asia and Africa who will suffer the most from Russia's withdrawal. By doing so, Russia significantly undermined global food security, and we already see prices going up. I reiterated to Foreign Minister that Ukraine considers Pakistan a good partner, and we are ready to work with your country on specific arrangements in the area of food security. And we will also appreciate if Pakistan voices its support of the continuation of the Black Sea Grain Initiative. And I was happy to hear from Bilawal that Pakistan will engage in this matter with the United Nations and Turkey as facilitators of the Black Sea Grain Initiative.
Thank you once again for this visit. I will be looking forward to hosting you in Kiev one day. Our nations have to meet more and talk more at all levels for the benefit of our people. Thank you. Thank you. We'll open the floor now. Mr. Raja Mohsin Ejaz of ALY. Thank you very much, sir. My question was to our visiting dignitary. Sir, what brings you to the Pakistan given the significance, because you are the first foreign minister of Ukraine to visit Pakistan in 30 years? Thank you very much. I think I already answered your question, but now, in addition to the reasons I mentioned, it was definitely worth coming because I enormously enjoyed Pakistani food, especially the dessert whose name I forgot. Kulfi. Yes, especially the dessert. But the rest part of my answer is in everything that I said before.